Welcome to Gurmantra Special Practice Series. Today's topic for practice is membrane potential. Okay guys, before starting, here is a little information. In case you are interested, आप मुझे Facebook पर भी follow कर सकते हैं. Facebook पर I do have two official IDs जिस पर आप मुझे follow कर सकते हैं. One is नेहा तनेजा, अगेन आपको मेरी डिस्प्ले पिक वहाँ पर दिखाई जाएगी. सेकेंड इज गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ. इन केस यू वांट कि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहे, इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप मुझे फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम इट आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ गुरमंत्रा, जहाँ पर मैं डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए पोस्ट करती हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर करती हूँ. सो मेनी बुक्स एंड लिंक्स आर ऑल्सो देयर. ये स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं सो दैट आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो. अगेन आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें. Okay guys, today's practice session as usual will be of 20 marks. Each question will be of 2 mark. Negative marking is there at the rate of 25%. In case there is a wrong question from your side, just deduct 0.5 marks from that question from your total score. Keep your pen and notebook ready. पेन एंड नोटबुक में ही आपको आंसर्स ए ऑप्शन के साथ जो है वो लिखने, सो दैट एट लास्ट आप आंसर की से अपने आंसर्स चेक कर सकें. मेक श्योर टाइम बाउंडेशन के साथ आप मूव करें एंड उसी टाइम में क्वेश्चंस को कवर करें. प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, दैट इज़ द ओनली वे आप अपना प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं. एट लास्ट अपना टोटल स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा आफ्टर कंप्लीट द टेस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay. Which of the following exist in nerve and muscle cells? Okay guys, moving to the next question. On which of the following organisms the research on nerve cells was first carried out? Okay, moving to the next question. Depolarization is when dash ions flow inside the neuron's membrane. Okay, moving to the next question. A neuron fires when
Okay guys, moving to the next question. Saltatory conduction occurs due to. Okay, moving to the next question. Nicotinic acetylcholine receptor is an example of what? Okay, moving to the next question. Voltage regulation means what? Okay, moving to the next question. Depolarization and repolarization changes that occurs during the action potential are produced by. Moving to the next question. Diffusion of potassium ions out of the cell makes the inside of it less positive or more negative and acts to restore the original resting membrane potential. This process is called as what? Moving to the next question. Which of the following statements about action potential is false?
Okay, please stop everyone. Here's the answer key. I'm giving you 1 minute. Please check your answers and tell me the score. Okay, everyone. Please do mention your scores. Do mention your scores in the comment section and please like the session if you feel so. आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट अपडेटेड नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें. इन केस आपको डाउट है तो एट द एंड जो है मैंने एक्सप्लेनेशंस दी हैं, आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रोटीन सॉर्टिंग. मेक श्योर you prepare it very well so that you can attempt the questions relevant to it. Let's move ahead with the relevant explanation of each question of the session. Everyone, if you talk about membrane potential, certain terminologies and the relevant facts are very important. Resting potential, depolarization, hyperpolarization, refractory period, the leaky channels working of sodium and potassium voltage gated channels. Make sure you learn all of them with the exact values properly because there are so many questions that usually come from this topic. Again, this is the topic that is touching two units. Unit number 2, that is cell biology, and unit number 7, that is animal physiology. Here are the rest of explanation. You can check afterwards. You can pause the video here or you can check them afterwards too. Okay everyone, see you soon in the next session itself. Keep learning, keep improving, keep smiling. Thank you so much for watching this session. See you soon. Take care, stay safe.